Jai Hind student, welcome to the third lecture of figure of speech. So we have already discussed some of the figure of speech. Now in this lecture also we'll be discussing few more figure of speech. Now starting with the onomatopoeia. So this is also a type of figure of speech, that is onomatopoeia. Now onomatopoeia uses words that imitate and reproduce real life sounds and action. The sound effect heightens the visual effect. Now, what is this figure of speech? Suppose you hear any sound like tick tock or buzzing sound, then tick tock sound, then splash sound. तो जब भी हम ये साउंड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में उस पर्टिकुलर एनिमल या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की इमेज आ जाती है. लाइक वेन एवर यू हियर टिकटॉक साउंड, देन दैट इज़ अ साउंड ऑफ क्लॉक. बज की साउंड आपको आएगी, बजिंग साउंड आएगी, देन दैट इज़ अ साउंड ऑफ बी. देन स्प्लैश की साउंड आएगी. सो यू कैन ईजिली कोरिलेटेड टू रिवर. ओके, सो किसी भी साउंड से किसी को आइडेंटिफाई करना, साउंड की हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी लिविंग ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना इज़ अ ओनोमैटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच. ओके, सो let's discuss the definition. Onomatopoeia is a figure of speech in which the word evoke the actual sound of the thing they refer to or describe. The boom of a firework exploding, the tick-tock of a clock, and the ding-dong of a doorbell are the examples of onomatopoeia. For instance, saying the gushing streams flow in the forest is a more meaningful description than just saying the streams flow in the forest. Okay, so the reader is drawn to hear the sound of a gushing stream, which makes the expression more effective. So such sounds are used just to make the writing more effective, and the reader can easily identify ki about which we are talking. Okay, so by this we can easily identify. So if you found such type of sentences, okay, showing indicating the sounds, then you can easily identify that it is onomatopoeia figure of speech. Okay, now let's discuss few examples of onomatopoeia. Now you can see the buzzing bee flew away. Okay, so here again the sound is there. The sack fell into the river with a splash. Okay, sack कोई बोरी जो है रिवर में गिरी, तो जैसे ही रिवर में कोई गिरता है या छलांग मारता है तो कैसी साउंड आती है? स्प्लैश. ओके, द बुक फेल ऑन द टेबल विद अ लाउड थम, धम से आवाज़ आती है. ओके, दैट इज़ अगेन ओनोमैटोपोइया. ही लुक्ड एट द रोअरिंग. ओके, सो रोअरिंग साउंड से आप तुरंत यू कैन ईजिली इंडिकेट कि वो लायन की साउंड है. द रसलिंग लीव्स केप्ट मी. ओके, सो लीव्स जो हैं, लीव्स जो जब विंड ब्लो करती है तो लीव्स जो हैं जो साउंड प्रोड्यूस करती हैं, दैट इज़ अ रेसलिंग साउंड. ओके, now here you can see a figure is given just to make you understand. When you see b then आपको कौन सी आवाज़ आएगी? बज़. whenever you see mobile then ring. So buzz and ring, they are the example of onomatopoeia. So in addition to sound, now let's talk about sound के अलावा these words they also refer action also. ये action भी show करते हैं. So in addition to sound, they represent many onomatopoeic words have developed meaning of their own. For instance, the word whisper. Okay, the word whisper not only represent the wispy or breathing sound of people talking quietly, but also describe the action of people टॉकिंग क्वाइटली. सो विस्परिंग, जब हम विस्परिंग वर्ड यूज़ करते हैं, फुसफुसाना जिसको हम बोलते हैं, सो इट रिप्रेजेंट द ब्रीथी साउंड और द पीपल व्हेन द पीपल आर टॉकिंग अमंग देमसेल्फ वेरी क्वाइटली, देन वी कैन यूज़ दिस टर्म विस्परिंग. Okay, so it not only indicate the sound but it also describe
the action. So what is the action here? The action is that the people, they are talking very quietly. Okay, so this is about the figure of speech, that is onomatopoeia. So now moving to the next. Okay, so now let's start with another figure of speech, that is apostrophe. So here you have to remember the figure of speech personification also, because this apostrophe and personification, they are very much closely related to each other. ठीक है, दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटी है, बट देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस, सिर्फ कुछ ही डिफरेंस है दोनों में. ओके, सो यू आई होप यू ऑल रिमेंबर पर्सोनिफिकेशन दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर. ओके, सो एपोस्ट्रॉफ, अगर एपोस्ट्रॉफ की बात करें, सो इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच in which a speaker directly addresses an absent or dead person, an abstract quality or something non-human, as if it were present or capable of responding. Okay, now जो personification था, in personification we give human attributes or human quality to an inanimate object और नॉन लिविंग थिंग और सम एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, उसको हम ह्यूमन क्वालिटी दे रहे थे. बट इन एपोस्ट्रॉफ वी ओनली एड्रेसेस देम, हम उनसे डायरेक्टली बात करते हैं, डायरेक्टली नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से बात करते हैं एज इफ़ दे आर लिविंग. इस तरह हम ये बात करते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं जैसे कि वो लिविंग है और वो मेरी बात सुन रहे हैं और मेरी बात सुन के वो रिस्पॉन्ड भी करेंगे. Okay, so in personification give human attributes to inanimate object or to abstract ideas, while apostrophe it only addresses them as if they are present and they are alive also. ओके, प्रेजेंट है और अलाइव है, तो हम डायरेक्टली इसमें एड्रेस करते हैं. यही दोनों में डिफरेंस है, दैट यू नीड टू रिमेंबर. नाउ समटाइम्स यू विल फाइंड दिस एपोस्ट्रॉफ इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय अ एक्सक्लेमेटरी वर्ड ओ. ओह अगर लिखा रहता है एक्सक्लेमेटरी वर्ड, दैट ऑल्सो सिग्निफाई कि ये इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज एपोस्ट्रॉफ. ओके, नाउ द राइटर और द स्पीकर, they use apostrophe, they use apostrophe directly. Through this apostrophe they speak directly to someone who is not or is dead, or speak to an inanimate object or non-living object. Okay, so this is the major difference between apostrophe and your personification. Now let's have a look on the definition of the apostrophe. In literature, apostrophe is a figure of speech sometimes represented by an exclamation such as "oh," that we have already discussed. A writer or speaker using apostrophe speaks directly to someone who is not present or is dead, or speaks to an inanimate object. It is important not to confuse apostrophe, the literary device, with the apostrophe punctuation mark. So there is no role of this punctuation mark. So you should not confuse with the punctuation mark apostrophe. The punctuation mark shows possession. Okay, whenever we use apostrophe, that shows possession, belonging, or marks the omission of one or मोर लेटर. और या तो कॉन्ट्रैक्ट में जब जैसे ही इज़ तो हम हीज़ लिख देते, ही देन एप्रोस्ट्रोफी एस. ओके, कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं जब हम दो वर्ड्स को एक वर्ड में, देन वी यूज़ एपोस्ट्रॉफ. सो दैट एपोस्ट्रॉफ इज़ डिफरेंट एंड दिस एपोस्ट्रॉफ इज़ डिफरेंट. Apostrophe in literature is an arrangement of words addressing a non-existent person or an abstract idea in such a way as if it were present or capable of understanding feelings. तो हम इनको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह शो करते हैं जैसे कि वो जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है वो प्रेजेंट है और वो रिस्पॉन्ड भी कर रहा है, वट एवर वी आर सेइंग वो फीलिंग्स भी शो कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल आई से, ओ रोज़ हाउ स्वीट यू स्मेल एंड हाउ ब्राइट यू लुक. सो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या है, एड्रेस कर रहे हैं. यहाँ हम
ह्यूमन क्वालिटी नहीं दे रहे हैं, हम डायरेक्टली उससे बात कर रहे हैं कि ओ रोज़, you are so you are so sweet smelling, and you look so bright also. Okay, so now I hope you have understood the difference between apostrophe and your personification. Now just go through the few examples of apostrophe. Bright star, how I wish I were as steadfast as thou art. नेक्स्ट, हेलो डार्कनेस, ओ माई फ्रेंड, आई हैव कम टू टॉक टू यू अगेन. तो यहाँ पे आप क्या, डार्कनेस इज़ अ समथिंग अनएनिमेट ऑब्जेक्ट, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है. तो हम इससे बात कर रहे हैं कि ओ माई ओल्ड फ्रेंड, मैं आया हूँ तुमसे बात करने. ओके, आई हैव कम हेयर टू टॉक टू यू अगेन. सो वी आर डायरेक्टली एड्रेसिंग डार्कनेस हेयर. ब्लू मून, यू सॉ मी स्टैंडिंग अलोन. Next, without a dream in my heart. Next, without a love of my own. So these are the few examples. Now let's take a look to few more examples. Oh, cell phone, why won't you load my message? हम बहुत इरिटेट हो जाते हैं जब कहते नहीं, ओहो चल ही नहीं रहा है फ़ोन, इसमें लोडिंग ही नहीं, डाउनलोड ही नहीं कुछ हो रहा है. तो हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्टली फ़ोन को एड्रेस कर रहे हैं. नाउ आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड. ओके, जब हम वाइल स्पीकिंग ऑन द फोन विथ समवन, होल्ड ऑन, माई किड्स गोइंग क्रेजी, जिम कम बैक हेयर, स्टॉप रनिंग विथ सीजर. ओके, then next, oh what a world it seems we live in. So again we are talking to the world. Oh holy night, the stars are brightly shining. So again we are here addressing the night. Okay, so this is about the apostrophe. Okay, and I think you all have understood the difference, because these two are very confusing, apostrophe and personification. So now I hope the difference is clear to you when we say it is apostrophe and when we say it is personification. Now let's move on to the next figure of speech. Now let's discuss another figure of speech, that is oxymoron. So this is also a very interesting or unique type of figure of speech, because in this we talk about two contradictory terms. Okay, two contradictory terms जो हैं, contradictory means two opposite terms, they are mixed, they are used together. So if the two opposite terms are, if you find in a sentence there are two opposite terms used together, then you can easily identify oxymoron. For example, I say living death. So living and death, these are two opposite terms. Sweet sorrow. Okay, cheerful pessimist. Paid volunteer. Okay, so foolish kindness. So these are the two you can say two opposite terms used together in a sentence. So whenever two contradictory terms or opposing terms are used in a sentence, then that sentence has an oxymoron figure of speech. Okay, now let's talk about the oxymoron literal meaning and its definition. So oxymoron is a figure of speech in which two seemingly opposing and contradictory elements are juxtaposed. Juxtapose means होता है एक दूसरे को बिल्कुल मिला देना एक साथ. The word oxymoron is in itself a oxymoron, because it comes from an ancient Greek word, that is oxymoron, a compound of the word axis meaning sharp and keen, and moros meaning dull and stupid. So the word oxymoron itself is made up of two opposing words, okay, that you have seen, that is oxus and moros. Oxus का मीनिंग क्या होता है, शार्प, कीन, ओके, इंटेलिजेंट, और यू कैन से, और मोरस का मीनिंग होता है डल, स्टूपिड, बेकूफ. सो देयरफॉर इट मीन्स समथिंग एकिन. एकिन मीन्स होता है लाइक टू, इट मीन्स समथिंग लाइक टू वाइज फुलिशनेस. ओके, वाइज फुलिशनेस. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ oxymoron. Now let's talk about few examples of oxymoron. Okay, suppose
there was a love-hate relationship between the two neighboring states. So here you can see love-hate is used together. So again it has a oxymoron figure of speech. Next sentence, the professor was giving a lecture on virtual reality. So virtual reality is a figure of speech. Paid volunteers were looking for the company. So paid volunteer. Next, the channel was repeating the old news again and again. So old and news. Okay. Next, the contractor was asked to give exact estimate of the project. So exact and estimate. Okay, these two again are the contradictory word, opposing words. So in this way you can identify the oxymoron figure of speech in a sentence. So I hope you all have understood these figure of speech. Okay, so once again, if not, then once again go through the video. Okay, so now in next video we will come with some more figure of speech, the leftover figure of speech. So hope you all have understood. Thank you for now.